Okay, starting in 1, 2, 3, start. Hello Subinku, ମୁଁ ସୁମନ ଦାସ IIT Kanpur ରୁ welcome କରୁଛି physics NCERT ର ଏଇ chapter କୁ chapter number 5 ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ work energy of power କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, right? So last class ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ work energy power जो तक मुझे याद है हमें माने kinetic energy को complete कर दिए, right? हाँ, यार वेक्टर तापर आम एग्जांपल 5 को आम 5.4 को आम देखी तापर आम खोज कि फोर्स और एक्स रो जो ग्राफ थाए अगर एरिया तुमको कौन दिए तुमको वर्क प्रोवाइड करे कौन दिए तुमको वर्क, ठीक है, वर्क डन नॉट वर्क डन। वर्क डन यूनिट कौन था है जूल, कौन था है जूल, वेरी गुड। नेक्स्ट हमें यार डेरिवेशन देखी थी, राइट? केमिति तो मोनो टिकी एटा को पुनी थ्री टिको हेवेन तो मुझे, राइट? मुझे लाइक तो हमर जो वर्क एनर्जी थ्योरम अछि, वर्क एनर्जी थ्योरम कौन कोए ना the work done by the net force is equal to change in its kinetic energy, ठीक है, change in its kinetic energy। एटा को मुझे पुनी डेराइव करिया पे चाहिए टिके ठीक से ठीक भाबरे पूरा सेन हम स्टार्टिंग करिया बट तब पर जस्ट वांट टू डेराइव दिस। ओके ओके, सो देखो बेसिकली कौन था हम kinetic energy के E equal to half in m into v square, half m into v square, right? तो differentiation करिए k with respect to what dx with respect to dx एटा कोन हिजबो तमरा तो एटा कोन हिजबो dk by dx will be equal to half m तो बाहर पळे आसीबो differentiation of v square by dx, this will be equal to half m into dv square by dv into dv by dx, dv dx टाइम से तो डिफरेंशिएशन करते लगे, this will be equal to half into m into 2 into dv into dv into dv by dx, dv by dx दोनों दो को और दिया, this will be not v, this will be only v, yeah? Okay, dv by dt, sorry not dx, just for dt, कोई सोच रहा नहीं तो गलती कर रहा हूँ, dt just not e e e, ठीक है। तो এটা কোন হিসেবে তোমরা এটা m into v into, right, dv by dt, तो dk by dt is equals to m into dv by dt into v into v, so dv by dt তোমরা কোন হিসেবে acceleration आगे ना, this implies what this is what okay d implies what dk will be equal to m into a, right, dv by dt a v into dt, v into dt, this implies what dk is equal to m into तुम्हारे कौन है फोर्स है जो फोर्स से तुम्हारा v कौन था dx by dt, right, this implies कौन dt पे कौन ही जाओ d v into dt equal to कौन आसे dx आसे आगे ना vdt अच्छी है ना तो अगर हम कौन लिखे भी dx लिखे भी এটা আচ্ছা m dot dx মানে আছে ওয়ার্ক প্লেস বেটা না, so the this implies dk equal to f into dx but change in work, ठीक है। this implies what k final minus k initial equal to net work done, like এটা by conservative force base बेटा by conservative force कौन है এটা what is conservative force, conservative force माने जहाँ की माने यार बहुत सारे प्रॉपर्टी अच्छी यार, राइट, माने याकू माने basically there are two kinds of forces, conservative force or non-conservative force, right?
कंजर्वेटिव फोर्स से गोटा थाए जे कि जहार की पोटेंशियल एनर्जी पाथ ऊपर डिपेंड करेनी, राइट? आउ जी मेनली जी मेनली हमर 11th रो डायनामिक्स ई फिजिक्स रे ग्रेविटी ही गेला, राइट? से ही गोटे माने कंजर्वेटिव फोर्स। बाकी बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रो हम कथा कहबा ताहाले हमर फ्रिक्शन हे जिवो, माने basically dissipating forces, right? So they are called non-conservative forces. तो यहाँ पर हम देखिए just start potential energy। आज हम टॉपिक स्टार्ट करबे एठो हमें पोटेंशियल एनर्जी। ओके कम से बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी माने कोन देखो जेमती मो लास्ट क्लास रे कहितली काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी stored in a body due to its motion, right? This potential energy एटा सेते बेले गोटे बॉडी रे स्टोर हबो जेते बेले कि तुम पाखरे मैं किसी गोटे फोर्स पर्टिकुलर पोटेंशियल लेवल रे रहिबो। व्हाट डज इट मीन माने बेसिकली कौन पे माने बताओ पर्टिकुलर लेवल मु कौन क्वेश्चन इफ आई जस्ट मेकिंग क्लियर पोटेंशियल एनर्जी माने एई केस रे इट इज ड्यू टू द हाइट ऑफ द हाइट एंड विच द ऑब्जेक्ट इज देयर माने अर्थ रेडियस रो अर्थ सरफेस रो सर से केते दूर रे अछि से केते दूर रे केते हाइट रे से अछि, राइट? देखो बेसिकली पोटेंशियल माने एमती जहा जहा जिते सब तुम कंजर्वेटिव फोर्स अछि से कंजर्वेटिव फोर्स को करंती जेमि फोर्स और फील्ड थाए कोन थाए फील्ड, राइट? से डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स on थाए तांकर से पर्टिकुलर गुटे फोर्स रे की कोन करे ना ताको पाखरे किछ गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस थाए कि सरफेस दे हैव ए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस माने एई पूरा सरफेस रे तो जो पोटेंशियल रहिबो से पूरा सेम रहिबो। हालांकि जेतले हम इक्विलिब्रियम विषय टिके चर्चा करिबा सेतबेले तमे भलसे एटा बुझी जिवो मु कोन कहय पय चाहूची stable equilibrium, unstable equilibrium and this neutral equilibrium, right? ये potential कौन हो, right? How to find ये तो हाँ माने कितने potential था k q by r था, right ना g m by r एटा मिथ है gravitational case है k q by r हमरो electrostatic तो case रे आसी एटा but these are some late topics जोटा कि हम पढ़िया ना हम 12th रे पढ़िया। तो राइट ना हमको कोन अच्छी ना पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली store energy is what लिखा है potential energy is the stored energy by the virtue of its position of the configuration of the body এছাড়া height বা position কিংবা তার जो configuration of the body द्वारा जहाँ भी ता पाखरे energy store हो ता भितरे that is called potential energy। suppose कौन एटा कि suppose किसी एमती की पूरा बहुत रागी गस, right? You are just very angry right now तो मुंडो भितर पूरा राग प्रबल ही अछि बट यू कैंट शो दैट, राइट? ए टाइम रे तुम सामने किन आसी तुम से देखि जदि छेली खानी करबो ताल तुम मार माने हुक्का मारिबो हां कि ना से तुम कोन गलो से जो पोटेंशियल तुम भीतर थिला ताको तुम बाहर करलो, राइट? ताको तुम बोल बाहर कर एग्जैक्टली दैट ओनली व्हाट इज एनर्जी माने पोजीशन किंबा बॉडी कन्फिगरेशन रो आसी, ठीक? इन राउट तुम जानी पड़छ कि तुम ठीक से बुझिलानी बट ଏବେ ଖାଲି ତମେ ଏତିକି ଜାଣ କି ଫୋର୍ସ ମାନେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ फोर्स potential create हुए at different particular heights that is equal to m into g into h mg into h आसे suppose तुम कौन करो अर्थ सरफेस रू h height रो अच्छो then the potential केता आसीबो potential energy will be m into g into h mg into mgh, ठीक है क्लियर? अच्छा तापर देखो एटा मतलब मुने किछ गोटे एनर्जी कंजर्वेशन अछि तुम पाखरे एटा तो बेसिकली एटा एमिति हुए कि कंजर्वेशन में एनर्जी हाँ अच्छा जो डीएक्स ठीक है देखो लिसन अप कि माने तो मुझे डिस्कस मैकेनिकल एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दीरा पार्ट है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी, सेलुलर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कौन पे ऐसे, काइनेटिक इज ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल कौन में ऐसे, ड्यू टू पोजीशन स्लैश कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन माने अवस्था, अवस्था इन द सेंस कि केमिति अछि, से टेढ़ा एमति एमति टेढ़ा अछि ना सीधा अछि, राइट ना ना एमति डिफॉर्म रे अछि, राइट। ऑल दिस। तो सपोज देखो मु आर गोटे भलो एग्जांपल कि रबर मान लो तमे माने से छोटो रबर बॉल देखछ केबे, हम रबर की जो रबर बॉल को तुम रिलीज करबो से कोन कर तळ पडियो पुनी बाउंस बैक ऊपर आसी ना नै, आसु नै, राइट। हां तो मतलब तो छाड़ी लो से एते ऊपर हाइट रे केमि आसी बोला, हम काହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଟଚ୍ ହେଲା ନା, ଦେଖ ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ କନଫିଗରେସନ ବତଉଛି। ନହେଲେ ସେ ଇନିସିଆଲି ଏମିତି ତ ଗୋଲ ଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଏଟା ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ କି ସେ ଡିଫର୍ମ ହେଲା ଟିକେ, ଡିଫର୍ମ ମାନେ କଣ, ତାଠୁ ସେ ଏମିତି ହେଲା ଟିକେ, ପୁଣି କଣ ହବ ଟିକେ ବାହାରି ପଡିଲା, ପୁଣି ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। तो जो एक केस रे, जो फर्स्ट केस रे तो सब काइनेटिक एनर्जी थिला, ए बस काइनेटिक एनर्जी थिला ता जेहेतु से किसी डिफॉर्म ହେଇନି, ତାର पोटेंशियल एनर्जी जीरो थिला। बट जेहेतु से एठी कोन से डिफॉर्म हैला त शेप रे टिके परिवर्तन हैला, इनिशियली केमति गोल थिला, एबे केमति हैला टिके एमति टिके। अगर एटा से एटा कथा कहूची, एटा बहुत कम समय पे जेतु से बाउंस बैक ही पड़ेल, ताको हमें माने फोटो माने बहुत सारा माने 120 एफपीएस 128 एफपीएस 128 एफपीएस फ्रेम्स पर सेकंड रे हम जो कैमरा क्लिक करे ताको देन हम देखले एटा देन तो एठी कोन ले एटा काइनेटिक एनर्जी थिला सेटा कोथि कन्वर्ट हैला ना पोटेंशियल एनर्जी रे, पुनी से पोटेंशियल एनर्जी पुनी एठी कोन कोथि कन्वर्ट हैला काइनेटिक एनर्जी रे, पुनी एटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज योर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी डासे ड्यू टू तुमरो पोजीशन किबा कन्फिगरेशन बॉडी रो, बॉडी डिफॉर्म हेले एटा से, ठीक है। और कथा कि हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यार फॉर्मूला कौन था पोटेंशियल एनर्जी रो, पोटेंशियल एनर्जी रो फॉर्मूला m into g into h, mg simply. Now suppose in case of spring it is equal to half into kappa into x square, अब kappa x square, तो spring कौन था, this is spring, right, right. Then the force, the x displacement, then the force by spring will be equal to kappa into x, kappa into x, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ हम पढ़िबा ठीक है कि कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी एटा एमती कहे, और एटा कंजर्वेशन ऑफ ये एनर्जी, राइट, ई कोन कहे, सिंपली एटा कहे कि एनर्जी जो पर्यंत तमर जो पर्यंत तमर कोनसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं से पर्यंत तुमरो जो काइनेटिक तुमरो एनर्जी अछि, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी माने कोन, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके ना, ये जो सम सेटा केवल चेंज होबने, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी, सपोज गुड, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। मैं कुछ ये बुझे पे ट्राई करियो फ्रॉम बेसिक एग्जांपल। सपोज बॉल थे लेठी, राइट, बॉल हम पूरा लो स्पीड ऑफ v, स्पीड ऑफ v, ठीक है, ठीक। तो जेतले सी पुनी एठी ए पटेल गेस रे तार एनर्जी के तार काइनेटिक एनर्जी आसी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इनटू m into v स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कौन मानने, जीरो, रेफरेंस, दिस इज द रेफरेंस लाइन, क्लियर, रेफरेंस लाइन जेतले सी h max रे पहुंचबो, माने सी जीवो 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 रहियो, पुनी रिटर्न कर h max रे, या पर काइनेटिक एनर्जी किता पाखरे जीरो, एंड स्टॉप हो जाई, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी
G equal to 0, right? Potential energy केते आछिबो m into g into h, m into g into h, ठीक है। सपोज करो सी एबे थर्ड केस रे कोन सी अछि इस मझिर अछि, राइट? मान लो सी के दूर अछि ना x दूर अछि फ्रॉम द बेस पॉइंट, तुम्हारा टोटल हाइट केते आछिबो h अछि, ठीक है। सी बे ऊपर अछि, नॉट ऊपर अछि, ऊपर डाउन ऑप्शन। तो एक हिसाब तार टोटल एनर्जी तुम कैलकुलेट करो ये बॉल रो, देखो मु ठीक से बने दोछ बनेडी माने total height h, ball is here, distance of x from here, and we don't know the speed, it's coming down, ठीक है। अच्छा, इनिशियली तार v थिला v नॉट थिला, v नॉट मान लो अब v नॉट स्क्वायर, ठीक है। जैसे v नॉट थिला ताले x दूरी पर तार स्पीड केते हेजिबो बताओ? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s, है कि ना? जो v स्क्वायर आसीबो फाइनल स्क्वायर ना, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर जोटा कि इनिशियल स्पीड स्क्वायर, एंड एटा इनिशियल v नॉट थिला ना एमती, राइट? अब एटा प्लस 2 minus g into x, v square will be equal to v naught square minus 2gx minus 2gx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर आर पोटेंशियल एनर्जी कितना आछिबो m into g into x, and our reference line to our reference line to से x दूरी पर अछि, ठीक है। अच्छा, तो आर पोटेंशियल एनर्जी कितना आसीगला हम पाखरे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ into m into v स्क्वायर जोटा कि आसीबो हमरो हाफ m into v naught square minus 2 into g into x, this is not potential energy, this is kinetic energy. Now जो potential energy ଅଛି ସେଟା ଆସିବ m into g into x, with the ମିଶା add କର this two, add କଲେ କଣ ଆସିବ ଏଟା, add କଲେ this will be equal to half m v square, so v naught square, half m v naught square minus m by 2 into 2gx x minus of mgx, देखो हमारा माइनस थोड़ी ऐड करें ना हमें प्लस, this implies half m into v naught square, देखिलो। So at any position ଯଦି ସି ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ସେ ଅଛି ଯିବ ଏମିତି ଆସିବ, ତ କୌଣସି ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ରେ, କୌଣସି ବି at any point of time ତାର ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି, that means kinetic energy plus potential energy, ଏ ଦୁଇଟି ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ସେମ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ବରାବର ରହିବ। This is called conservation of mechanical not engineering, mechanical energy. Well, I'm from mechanical energy, no? The mechanical energy ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଏଠି, କଣ କହୁଛି ନା this one, ଏଇଟା one potential energy by dx, କଣ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା सर कंजर्वेटिव फोर्स पड़े चलेगी ठीक, नहीं देखो कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ ये देखने देना, ये भी देखने देगी एଗୁଡ଼ା, this is quite important कि कंजर्वेटिव फोर्स और प्रॉपर्टी कौन कौन, कंजर्वेटिव फोर्स ମୁଁ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, कंजर्वेटिव फोर्स ସେଇ फोर्स जोटा कि पाथ ऊपर डिपेंड करिवो नाही, ଯାହାକି ସେ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରୁ ନଥିବ ସିଷ୍ଟମ ର, ରାଇଟ୍? ପାଥ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି ମାନେ କଣ, ସପୋଜ କଣ ତମେ ଏଇଠି ଅଛି ରାଇଟ୍, you want to come from e point to e point ତମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ କେମିତି ଆସିପାରିବ, ତମେ ଯେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଇଆଡେ ବୁଲି ଏଇଠି ଆସିପାରିବ, ରାଇଟ୍? ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବ, ଥର୍ଡ କଣ ନା ଥର୍ଡ ଏଇଟା କି ତମେ ତମେ ଯେମିତି ଯେମିତି ବୁଲି 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 ଏଇଠି ଆସିପାରିବ, ରାଇଟ୍? बट इफ दिस फोर्स जो फोर्स द्वारा तमे ई पॉइंट रे पॉइंट का आसुचो, ଯଦି ସେ ଫୋର୍ସ କନଜରଭେଟିଭ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କେସରେ ତମର ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହବ, ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ହବ that will be same, that will be, କାହିଁକି ନା conservative force ର ଯୋଉ potential energy ଥାଏ that only depends upon the initial and final position,
incident and not the intermediate. ठीक है, got it? Very good. It is all podium what data. There are force. Sorry. The force effects in the body can derive from solar quantity effects by the relation of the equation 5.9. कहाँ से 5.9 by this 5.9? The three-dimensional कौन सा चीज़ the force effects conservative it can be if हम derive माने basically जो सही force जोड़े की आपको follow करी थी वो जहाँ की potential will be equal to f minus of fx dot dx minus of f dot dx the whole थी वो पहले that is a conservative force. Sorry, right? The second कौन है done by the conservative force depends only the end point कोई थी ना initial और final position ऊपर depend करियो ठीक माने intermediate stage ऊपर depend करियो second कौन है third definition state that the work done by this force is equal to zero obviously ना बुझियो नहीं था तो तुम ये start कर लो starting from here final position number 8 energy मतलब second law तुम कौन कहले मैं second r जो property से एटा कहले कि तुम जो जति energy आसीबो that will be equal to the difference of the energy between these two points right again ଯଦି ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ପୁଣି ବୁଲି ପୁଣି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲ ନୋଟ କ୍ଲୋଜ ଲୁପ୍ ମାନେ ବୁଝିଲ ନା ସର୍କଲ ତମ ସର୍କଲ ଏମିତି ବୁଲଉଛ ହେଁ ହେଁ ତ ସେଇ କେସରେ ଆର ୱାର୍କ ଡନ୍ କେତେ ଆସିବ ୟାର ଏନର୍ଜି ଇନିସିଆଲ ପୋଜିସନ କୋଉଟା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ପୋଜିସନ କୋଉଟା ଏଇଟା ତମେ ସେମ୍ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସେ ନା ଯେହେତୁ इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया सेम है ताहले एनर्जी कितना आसे एकदम जीरो ऑब्वियस सी बात है तो बड़ा କଥା थोड़ी है ठीक रोज पता चली जीरो होता है देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट total mechanical energy of an system is conserved if the forces doing work on it are conservative हमें जहाँ भी कहले कि तो एनर्जी जो अच्छी जितने भी सब आगे ना कहले ना कि काइनेटिक mechanical energy constant रखिबो that will be only valid ଯେତେବେଳେ କି ସିଷ୍ଟମ ରେ କୌଣସି ବି ତମର ନନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ ଫୋର୍ସ ନଥିବ ସେ ନନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ question is friction କଣ friction ठीक है friction ଗୋଟେ ନନ୍ କନଜର୍ଭେଟିଭ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଏଗୁଡା କଣ କରିବେ ଏନର୍ଜି ଡିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏନवायरमेंट को फ्रॉम द सिस्टम ठीक तो ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल कौन तुम ग्रेविटी ला कौन सी वाला ग्रेविटी कौन कुछ है ना वो डिस्कशन so ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରୁଭ କରିଛି ପୁଣିଟା ଏ ଦେଖ EH ର ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରୁଭ କରିଥିଲି ନା ସେଇଟା ସେମାନେ prove ठीक है ତାହେଲେ ସେ କରିଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହାଇଟ ରେ ମାନେ ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ parabolic forces ମାନେ path ରେ straight line up and down right ଏଠି ତମର ଯୋଉ total energy ଥିବ that will be constant न्यूटन सेकंड लॉ कौन ଅଛି ଗୋଟେ what is this अच्छा मतलब ଏବେ କହିବା ପଡିନା ଏଇଟା ଥୋଡି ଏଇଟା पेंडुलम तो आई थिंक easily पढ़ा जाए ना because more knowledge कि this pendulum comes in circular motion right circular motion ରେ ଆପଣ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ମାନେ pendulum pendulum ମାନେ କଣ କିଛି ନାହିଁ କେବେ ଦଉଡ଼ିରେ କେବେ ଏମିତି କିଛି ପଥରକୁ ବାନ୍ଧିକି ବୁଲେଇଛ କେବେ that is a pendulum thus pendulum can be anything there is various types of pendulum compound pendulum simple pendulum pendulum or time period find out କରିବା and all these steps ठीक तुमने करिए थी लगे a bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is impacted with v naught the lowest point A, such that completes semicircular trajectory in the vertical plane of the string becoming slack only reaching the topmost point. बस अरे यार 80 तो first point is that कि जब भी इनसे सवाल आसीबो the first thing that we should do is to कौन रूल भूली गेल तो मान की coordinate system assigning of what no assigning of coordinate system assigning of coordinate
system. Okay. Second point that you guys are going to do is length L we not अच्छी तेरा करेगा. So Shivam Kochi ki suppose you are having a but a pendulum thila just like this. ଏବେ ତମକୁ ସେ impact କଲ force ରେ ଯେ v not ହେଇଗଲା ଆଉ the top most ଯାଇକି ସେ କଣ semi circular ଗଲା ଏମିତି ଏଇଠି ଯାଇକି ସେ stop ହେଇଗଲା ନା କଣ କହୁଛି ସେ the lowest point A completes the semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. अच्छा. What do you mean slack? Slack means CD कमजोर पड़ गया पड़ेगा कमजोर पड़ेगा ठीक है. Obtain an expression for V naught the speed at the highest point B and C receive the kinetic energy simply initially V naught अच्छी length L दे रखा अच्छी into length के L अच्छी ना L मैंने तेरे जो string length था बा ठीक है. अच्छा जैसे से E थी जब देखो मु E point को reference system मानी कौन मैंने को मु reference system then here potential energy zero ही जब first point at the lowest point at lowest change करेगा लगी point kinetic energy equal to half into m into v naught square potential energy equal to 0 and set a reference system second point at point B and point B को डाउन A point 90 degree ठीक है तार kinetic energy केते हिजबो that I don't know माने suppose कर एमती half into m into VB square ठीक है potential energy केते हिजबो m into G into केते L ना अरे यार देखी बन तो माने की एटा दूरी केते एटा this length 80 से अछि ना तो एटा what will this x L हिजबो ना तर total length enter 90 degree. अच्छा अब जेहेतु there are no non-conservative forces so initial total energy will be equal to final total energy right so this will be equal to half m into v naught square will be equal to half m into vb square plus m into g into l सारे तरीके से m गया then what vv square naught square will be equal to v naught square by 2 minus g into l. Now vb will be equal to under root of v naught square by 2 minus g into l. ठीक है माइनस g into अब देखो टॉप मोस्ट पॉइंट रे कथाटी अलग हम टॉप मोस्ट पॉइंट माने स्टार्ट करें बुली बुली ए पॉइंट बी थिला हमर ए पॉइंट सी तो ए पॉइंट रे सी कोची से स्लैग माने स्टेड नब अछि माने मु एटा कहबा चाहूछ कि जेतला हम सर्कुलर मोशन पढिबा आपरो डिटेल रे पढिबा क्लियरली राइट कि केबे तुम स्ट्रिंग रो टेंशन जीरो हो जिवो बा केतले तुमरो स्ट्रिंग केतले तुम स्पीड जीरो होबो राइट तो फिर भी जो जेतले at मुंची at the ball at point C माने ये पॉइंट अछि ठीक है तो यार ओके यार पोटेंशियल एनर्जी केते आसीबो केते देबो m into g into 12 एना एटा l 8 होती कि 12 कोन ये भी l 12 है m g into 12 kinetic energy केते आसीबो half into m into v c square ठीक है this implies what mg into 12 plus half m into v c square will be equal to half into m into v naught square initial kinetic energy equal to final kinetic energy ठीक this implies what vc square equal to v naught square by 2
minus 2GL. This implies VC equal to net of V naught square by 2 not हो जाएगा minus 2 into G. ठीक है अब रिजल्ट में हाँ एटा सियोर कि ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଏଇଟା ପାଇବା କି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ନା ଏଇଟା ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 5GL ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଦରକାର ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 2GL ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚ ତାହେଲେ ତମର ସ୍ପିଡ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ GL ଦିସ୍ ଇଜ ଦ थ्री टर्म्स लाइक तुमको मନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ ତେଣୁ ସର୍କୁଲାର ମୋଶନ ପଡିବା ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ 5GL କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ମାନେ ବେସିକାଲି କଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ତମର ଯୋଉ ପେଣ୍ଡୁଲମ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 90 डिग्री ଯଦି ପହଞ୍ଚୁ ତ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ କେତେ ସ୍ପିଡ ତମେ ଦେବ ତ ୟାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 2GL ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 2GL ଦେଲେ ସେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏହାର ସ୍ପିଡ ଯୋଉ ଥିବ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ तुम ଏଇଟାକୁ ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 5GL କରି ନବ 5GL ତାହେଲେ ସେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ठीक है और ଯେତେବେଳେ ସେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାର ସ୍ପିଡ ଥାଏ स्पीड इज इक्वल टू ऑफ GL ये सब बात की बात है करेंगे इसके बारे में ठीक है तो दिस रेशियो फाइंड आउट करता है दिस फाइंड रेशियो देखो 5/2 कौन आसे एठी एनर्जी बैलेंस कर छी टेंशन को अकाउंट रे नहीं छी अरे ठीक है कोई ना हम सर्कुलर मोशन रे आसे मु सर्कुलर मोशन एगुडा ठीक से पढ़ाइबी ठीक है रख क्लियरली सर्कुलर मोशन चैप्टर अछि ना नहीं तुम इनिशिएट रे नहीं तो है ठीक है it has to be there तापर देखो एटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखो पोटेंशियल एनर्जी मु तुमको कोन कहिथि कि स्प्रिंग रो द फोर्स আছে যদি সে ন্যাচারাল লেন্থ থ্রু x ডিসপ্লেসমেন্ট তার ଅଛି স্প্রিং টা x ডিসপ্লেসমেন্ট দেন द फोर्स সেটা আছে কেদা আছে এটা আছে তোমার kappa into x minus of kappa into x ये ठीक है minus of kappa into x ଆଉ ଆମେ पोटेंशियल एनर्जी रो ଆମେ डेफिनेशन कोन लिखथले नहीं पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स तुमको कहली कि स्प्रिंग गोटे कंजर्वेटिव फोर्स दिस इंप्लाइज व्हाट कि the potential energy PE equal to minus of F into Fx into dx ठीक है minus of kappa x into dx इंटीग्रेशन हो 0 to x naught kappa बाहर प्लेस रे इंटीग्रेशन ऑफ x dx कोन आछे x स्क्वायर बाय 2 ठीक है तो एटा यहां ये माइनस ऑफ हाफ kappa x स्क्वायर ठीक है ना इजी इजी यार दिस इज तो एटा दिस इज कॉल्ड इट्स नेचुरल लेंथ तुम देख रहे हो अच्छा लगे तुम लोग जे क्लोज नेचुरल लेंथ जैसे ए टू सी एक्स डिस्प्लेसमेंट एमटी एक्स हैला देन फोर्स तक लागबो एमटी राइट जैसे फोर्स तक देन तक कंप्रेस करले देन द फोर्स केमते लागबो इन दिस डायरेक्शन गॉट इट एमटी पुणी एमटी माने अरे ऑब्वियस बात है स्प्रिंग तो फील करना है देखो फिजिक्स एटा मैथ नहीं कि ओनली खाली तुम्हें नंबर ऊपर डिपेंड करो राइट फिजिक्स तुम्हें विजुअलाइज भी करि परिबो ठीक है ना दिस इज नॉट मैथ की माने खाली नंबर आसिले ही होबो विजुअलाइज करो ना भाई ठीक फिजिक्स को तुम जते विजुअलाइज करिबो सेते इजीली तुम माने कांसेप्ट को बुझी परिबो कि तो सब बड़े एमती डिपेंड ही रहउनी फार्मूला ऊपर देखो फार्मूला तो थ्योरी तो मते वर्क डन बाय द स्प्रिंग नो स्प्रिंग एट द एंड पॉइंट अच्छा देखो हम एठी देखो स्प्रिंग फोर्स में कोइथिन ना ये पोजीशन स्प्रिंग फोर्स is a position dependent force as it is asserted by the hooks second कौन ना work done depends only on the initial and the final position ठीक है ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ ହେଲା ଗୋଟେ this is a conservative force हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स देखो एगुला सब प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं नॉट गेटिंग दिस वन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है
तो कंजर्वेटिव फोर्स बहुत सारा प्रॉपर्टी अच्छी जेमती मनुष्य कौन प्रॉपर्टी कौन दुईटा हाथ रहा अच्छी दुईटी आखि देवार अच्छी माने टिपिकल नॉर्मल मनुष्य राइट है ना सेमती मनुष्य कहवा राइट ना से कंजर्वेटिव फोर्स गोटे प्रॉपर्टी कि कौन सर कि तार पोटेंशियल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है नथिबो ओनली इनिशियल फाइनल पोजीशन ऊपर से डिपेंड करथिबो ठीक है एमए सब अच्छा ताले आपको चेक करे पे हम केमे हाउ टू फाइंड कि गोटे फोर्स हमर कंजर्वेटिव कि नहीं तापे हम गोटे मेथड यूज कर दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड माने बेसिकली कौन करे जाय जस्ट टेल यू शायद एटा माने एनसीईआरटी तो नाही माने तुम बुझी परछ नै कंजर्वेटिव फोर्स रे एगुडा प्रॉपर्टी गुडा एगुडा सब जहां भी तुम पॉइंट देख 1 2 3 माने तो प्रॉपर्टी मैच करूची देखो सीन कथा एटा जदि सेटा कंजर्वेटिव फोर्स ताले से ए प्रॉपर्टी को से फॉलो करियो बट एनसीईआरटी एटी कोन कहै छै ना जदि सेटा प्रॉपर्टी तार एटा ताले से कंजर्वेटिव फोर्स जोटा कि ट्रू नाही रिवर्स इज नॉट ट्रू नॉट सब ट्रू नै ताले हम केमि चेक करियो गोटे फोर्स ताले हम केमि चेक करियो कि गोटे फोर्स हम कंजर्वेटिव कि नै ताबे हम गोटे मेथड यूज करू दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड एंड दैट इज कैसे हेडा फोर्स हम नीचे आज कौन fx i cap fy j cap then do what thing fx को तुम्हें dy रे डिवाइड करो fx डिफरेंशिएशन with dy and fy डिफरेंशिएशन with dx suppose this is m and this is n now if m equal to n then it's a conservative force सर अपने क्या बोल दे कुछ समझ में नहीं आया सर अपन कौन पढ़े कौन कुछ बुझ जाई पर नहीं उड़ गए तो तुम छोड़े मैंने इनिशिएटर 9 दिस इज एडवांस लेवल ठीक है कौन डायग्राम कर बनी छे भाई ओके एनर्जी कौन से बनी छे ग्राफ बनी छे डाउन आका भी तो ग्राफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी अरे हाँ यार अगर नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी राइट नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ठीक এটা কোন এটা তোমার এটা जो नेट सबमिशन बट नेट जो सम এটা सब कांस्टेंट रहेगा दिस टाइम मैकेनिकल ठीक ये क्वेश्चन તમે કરો 5.8 टा डू इट यूनिट पे ध्यान दो ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स ऊपर ठीक है चर्चा नहीं सुननी ठीक है कौन कुछ এটা information time is absent not all forces are conservative friction for example is देखो कोई थी ना principle of conservation energy will have to modify in this case अच्छा तो कौन है मैं इतनी एनर्जी लॉस कर दिया ना जीरो पोटेंशियल एनर्जी हाँ এটা बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीरो बोले किसी पोटेंशियल एनर्जी न থাকে যদি मैं तुमको पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने देबी তাহলে this that seems like this is potential energy is proportional to r radius नहीं radial distance तो ये जीरो कितना होगा मतलब मैं r into infinity r tends to infinity right ना तो बट r के बिना infinity थोड़ी ही पारी ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା କିଛି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାନ କି ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଆମେ କଣ ग्राउंड को हमें हो गया एयर पोटेंशियल एनर्जी जीरो सपोज देखो कि अरे देख যদি আমি सपोज देखो কিছু अच्छा কোন একটা জিরো পোটেনশিয়াল এনার্জি আমি মানছি ঠিক আছে सपोज देयर इज ए जीरो पोटेंशियल एनर्जी তাহলে তা অনুসারে গ্রাউন্ড রে কিছু ଗୋଟେ পোটেንशियल एनर्जी ରହିବ ହଁ କି ନା କେତେ ରିସୋର୍ସ ମାନେ ସେ 10 ସେଇଟା ଏଆଡେ ଅଛି 15 डिफरेंस କେତେ 5 सपोज मु ग्राउंड को पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानले ताले एटा केते हिजो 5 हिजो मे डिफरेंस केते हिजो तमरो हम 5 ना तो पोटेंशियल एनर्जी केस रे हम केबे ले एग्जैक्ट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी को यूज करू हम सब कोन करता रिलेटिव बा डिफरेंस को हम सब यूज करू ठीक है ना बुझे ना ये बाकी हां एटा सब कोन कहै छी गुडा एग्जांपल 5.9 भी डिजाइन करि नबो कोन कहै छी पढी मु ठीक है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन
फ्रिक्शन कोन एथरे इंक्लूड करछन कि फ्रिक्शन में स्पेशल चैप्टर नाही उपरे कहि दोछ मेनली फ्रिक्शन दु थाय तमरो राइट फ्रिक्शन दी टाइप थाय गोटेला स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तमरो एंटी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन माने कोन स्टैटिक फ्रिक्शन इज very useful this is not very useful ठीक this is your friction profile the static friction by fs is equal to mu s into and this f is equal to mu k into and माने कोन normal force ठीक mu कोन coefficient of friction coefficient of friction कोन हबे coefficient of friction depend करे तमरो roughness ऊपर surface roughness and माने normal ठीक है inertia ठीक है बस ଏତିକି ଥିଲା यार बाकी सी फॉर्मूला में पढ़ देखिए यार तो हाँ ये एग्जांपल तो एटा मैं नेक्स्ट क्लास में करबे कि मैं तुम्हें ट्राई करो नेक्स्ट क्लास में मु या विषय या माने याको डिटेल पढ़ाइबे ठीक है नो इश्यू दैट ऑल क्लियर बाकी नेक्स्ट क्लास में पावर पढ़िबा ठीक है बाय बाय